أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 8th, this is subject English and our lesson is it is a short story. The name of the short story is Colors of Rainbow. Colors of Rainbow is a Dogri short story. It is about the couple who engage in small quarrels and arguments. Finally, things settle at a loveful and joyful note. So far we have read first para of it. Today we will take the second para of this short story. So let's start. A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the coat. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chilly plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. Papa Ji, see the swing of Gudda Guddi, Munni was saying, clinging to me. Where is it, daughter? I asked. There up in the sky, multicolored, replied Munni. Is that the swing of Gudda Guddi? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then who is it if not theirs? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं यानी ये एक अफसाना है, मुख्तसर सा अफसाना, और ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिनमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और आखिर में झगड़े प्यार भरे एक लुत्फ अंदोज ढंग से अंजाम पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अभी तक हमने इसका एक पैरा पढ़ा है। आज हम दूसरा पैरा ले रहे हैं। A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारपाई के ऊपर बैठे बैठे ही मैंने जिस्म के गिर्द बिस्तर की चादर कस कर लपेट ली। The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. बच्चे खेलते खेलते कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। वो बहुत शोर कर रहे थे। They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबर ही था। मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे। The chilly plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. लेकिन मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे और उन पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर जा रहे थे। कई बार वो सूरज को ढक लेते और अंधेरा सा हो जाता और कई बार सूरज बादलों से बाहर निकल आता। Some patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. Papa Ji, see the swing of Gudda Guddi, Munni was saying, clinging to me. पापा जी देखो देखो गुड्डा गुड़ी का झूला, मुझसे चिपकी हुई मुन्नी कह रही है, चिपकी हुई मुन्नी कह रही है।
Where is it, daughter? I asked. کہاں ہے بیٹی؟ میں نے پوچھا. They're up in the sky, multicolored, replied Munni. وہ وہاں آسمان میں رنگ برنگا، منی نے جواب دیا. Is that sewing a gudda gudi? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then who is it if not theirs? پوچھا. لیکن کیا وہ گڈا گڈی کا جھولا ہے؟ میں نے پوچھا. اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن قدرے ناراضگی والے سر میں. اگر یہ ان کا نہیں تو یہ کن کا ہے؟ بچوں، آج آپ نے اس کا ایک اور پیرا یعنی 1.5 پیرا پڑھا، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے پیریڈ میں. باقی وسلام.